Arguably one of the biggest stars on the planet, there's no denying the fact that Aamir Khan today has achieved a level of superstardom most actors can only dream of. From a bit role in an experimental FTII film back in 1984 titled Holy to playing the lead role in the highest grossing Indian film till date, Aamir truly has come a long, long way, all thanks to his perseverance and hard work. However, Mr. Perfectionist बनने का उनका ये सफर इतना आसान भी नहीं था. In a recent candid chat with renowned writer Mr. Javed Akhtar, Aamir opened up like never before. मौका था आमिर खान फिल्म फेस्टिवल के ओपनिंग का and Aamir led all his fans down the memory lane as he reminisced about his humble beginnings. He started off by revealing how, after his debut film Qayamat Se Qayamat Tak's success, he got offered almost 400 films, but he didn't know how big of a responsibility it is to sign even one film. और जब कामयाब हुई तो उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑफर आए. आई एम टॉकिंग ऑफ 1988. इतने ऑफर आए, मतलब मैं 300-400 ऑफर आए थे, मजाक नहीं कर रहा हूँ. ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज्ड टू गेट सम 15-20 ऑफर्स. पता नहीं कहाँ से प्रोड्यूसर आ रहे थे. और मैं नया था, मुझे समझ में नहीं आया कि फिल्म में साइन करना, इवन साइनिंग वन फिल्म, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती. उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था. सो आई एंडेड अप साइनिंग 9 or 10 films in the first offers that I got. He also stated how, even after a blockbuster beginning, he didn't get a single offer from any big directors of that era. एक तो जो डायरेक्टर्स जिनके साथ मुझे काम करना था ना, जावेद साहब, जो आप जिनका काम पसंद करते हैं, जो कामयाब भी हैं, सुभाष घाई, you know, at that time they were the top directors, and I wanted to work with them, but none of them offered me a film. उनका ऑफर नहीं आया. He also shocked everyone by admitting that during the initial phase of his career, he wasn't happy at all with the kind of films he had signed, to the point that he would cry every single night. So, when the shooting of these films began, I realized that I had made a mistake. क्योंकि मैं खुश नहीं था जावेद साहब. मैं घर जाता था और मैं रोता था. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. I used to get so disturbed, क्योंकि मैंने कहानी सुन के कहा था, लेकिन हर इंसान का नजरिया अलग होता है. तो that lesson was a very big lesson for me. Those 6 months, 1 year, which I was struggling, I realized that it's not only the script. In a hilarious way, Aamir also told everyone how film budgeting works, leaving everyone in splits. सीन ये कि एक खूबसूरत से पहाड़ पे रोमांटिक सीन चल रहा है. हीरो जो है पहाड़ पे खड़ा होकर गाना गा रहा है. अब मैं सोच रहा हूँ पहाड़ जो है कश्मीर है, कश्मीर की वादियों में हम गाना गा रहे हैं. डायरेक्टर सोच रहा है यार खंडाला में कर लेंगे, मुझे पता है प्रोड्यूसर का बजट इतना नहीं है, खंडाला में भी अच्छी वादियां हैं. प्रोड्यूसर सोच रहा है फिल्म सिटी पे 2-3 टीले वहां कर लेंगे. Perhaps the most shocking part came when Aamir told everyone how, after giving back-to-back flops during the initial phase of his career, the media had written him off as a one-film wonder. उसके बाद आई अव्वल नंबर, उसके बाद आई लव लव लव. तो ये फिल्में नहीं चली, and my career was actually going down after that. तो the media had announced me as one film wonder. And rightly so. I don't blame you all at all. I was a one-film wonder. But he showed true resilience by saying no to renowned director Mahesh Bhatt even when he had no good films in hand, simply because he didn't like the story Mahesh Bhatt had narrated to him. अगले दिन शाम को I went to अपना भट्ट साहब. I did not thought what to say, but I blurted out the truth. I said, भट्ट साहब मैं नहीं कर पाऊंगा फिल्म. He said, I said मुझे फिल्म स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई. और मुझे पता है कि मैं कौन हूं. आप इतने हिट डायरेक्टर हैं, मैं आपको ना बोल रहा हूं. आप शायद इसके बाद मेरे साथ कभी मुझे ऑफर नहीं देंगे, बट आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से. But thankfully, Mr. Bhatt took his refusal in the right spirit and proceeded to direct him in Dil Hai Ki Manta Nahi in 1991. The film turned out to be a huge blockbuster, and the rest, as they say, is history. Later in the session, Aamir also revealed how he had said no to Yash Chopra's 1993 hit Dar and admitted that he couldn't have done what Shah Rukh Khan did in the film.
जो सुर यश जी पकड़ रहे थे फिल्म का, आई थिंक शाहरुख वाज शूटिंग दैट सुर स्लाइटली बेटर. तो इन रेट्रोस्पेक्ट मुझे लगा वो मैं करता तो शायद कुछ और ही हो जाता, बिकॉज आई वाज लुकिंग एट इट डिफरेंटली. And in a rather creative way, Amir also hinted at how the OTT platforms are responsible for Bollywood's poor business these days. हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ऑडियंस को कि हमारी फिल्म आ रही है, आप आओ टिकट ले लो, और अगर नहीं लिया तो 8 हफ्ते बाद हम आपके घर पे आके ये छोड़ के जाएंगे. ये हमारा बिजनेस मॉडल है. मैं अगर इसमें कुछ भी गलत बोल रहा हूं तो मुझे आप बताइए. Trust Amir Khan to always give a fresh perspective to an already existing narrative. And this is exactly why we love him and his movies. What is your favorite Amir Khan film? Do let us know in the comments and make sure to subscribe to Shosha for your daily entertainment fix.